A majestic banyan tree presides over a little ridge by the banks of the Ganga, just a few kilometers away from the smoking towers of the Narora atomic power plant in Uttar Pradesh. Priests and guardians of the tree say that the Siddhvari, as they call it, has existed for thousands of years, with its roots dating back to the Mahabharata. But radiocarbon dating, recently undertaken by researchers from the Botanical Survey of India with a team from Romania, reveals that the tree is an estimated 400 to 500 years old. The study, published in the latest edition of the journal Current Science, may have disappointed the priests, but the Siddhvari is now the oldest banyan tree to have been scientifically dated in the world. Residents say that praying at the sacred grove where the tree lives takes away all their troubles and fulfills their wishes. We are at the Ramsar site near Narora. Right behind us, you can see the banyan tree that has been making news for the past few days. And the reason that we are here is that this particular tree has now become the oldest in the world to have been dated by using radiocarbon dating. A team of scientists have come, taken samples, and gotten an idea of how old this tree is. And according to their estimates, this banyan tree is more than 450 years old, with an estimate of at least 60 years more, give or take. So we are here to sort of understand this environment, what this tree means to the locals, and what is the kind of ecosystem that we see around it. And right with me, we have the priest who looks after the temple and this tree here, and he is going to tell us a little about the local cultures, the religious beliefs that they have around this tree. नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. मुझे आप ये बताइए कि आपने इस पेड़ के बारे में क्या सुना है, ये कितना पुराना है और कब से इस पेड़ की पूजा करी जा रही है? ये बरगद का पेड़, बट वृक्ष भी कहते हैं इसे. ये अंजना खार में है, रामघाट के जंगल में. और इस पेड़ को हजारियों साल पुराना बताते हैं. और यहाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर चुके हैं संत लोग, जैसे हरिहर बाबा है, उड़िया बाबा है, गढ़ा वाले बाबा हैं, निनुआ बाबा हैं. बहुत से संत यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं. और जो कोई श्रद्धालु यहाँ पे आता है उसकी आशा पूर्ण होती है. आप बता रहे थे कि आपने सुना है कि ये वृक्ष जो है कुछ महाभारत के समय से. हाँ, ये बलदाऊ जी के हाथ से बताते हैं. इसकी स्थापना बलदाऊ जी के हाथ से हुई है. और रामघाट में बनखंडेश्वर महादेव की स्थापना भी बलदाऊ जी के हाथ से हुई है. तो ये आपने ये भी बोला है कि आपने सुना है जो अंग्रेज थे वो पहले आके इसका. हाँ, ये भी सुना है. पहले अंग्रेजी शासन में इसकी सर्वे भी हो चुकी है. वो भी बताते थे 5000 साल से ऊपर का. तो अभी जो है, जो वैज्ञानिक आए थे वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये जो है 450 साल पुराना है, 500 साल पुराना है. तो इससे आपका क्या कहना है? वैसे ये वृक्ष तो बहुत हजारों साल पुराना है. इतना तो नहीं होना चाहिए, जैसे बता रहे हैं 5.5 साल पुराना है. इतना नहीं होना चाहिए, वैसे हजारों साल पुराना है ये. तो यहाँ पे थोड़ा ये बताइए कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो इस वृक्ष का कैसे इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे आके पूजा करते हैं, क्या कैसी जो भावनाएं हैं इस वृक्ष के साथ वो कैसी हैं? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, आसपास के आते हैं, आशा लेके आते हैं, उनकी सब पूर्ण होती है. आपसे वो आपके साथ उनका कैसा रिश्ता है? आपसे अपनी समस्याएं, वो समस्याओं के बारे में आपके साथ बात करते हैं? हाँ, करते हैं. समस्याओं के बारे में हम बताते हैं, उनको पूजा कराते हैं और उनकी सिद्ध बाबा सुनते हैं. आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ मैं 10 साल से हूँ. और ये जो आप हर दिन आप सुबह उठते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, आप इस वृक्ष का आप किस तरह से ध्यान रख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं. सब साफ सफाई करते हैं. 3:45 बजे उठते हैं और धुलाई करके आरती भी करते हैं. उसके बाद 6 बजे तक अपनी आरती हो जाती है. उसके बाद अपने भजन पे बैठते हैं.
यहाँ पे आपको जो ये जो एरिया है वो वन विभाग के में आता है, तो वो क्या आपकी कैसे मदद करते हैं इसमें? इसमें वन विभाग वाले तो कोई मदद करते नहीं, ये है श्रद्धालु आते हैं वही सब मदद करते हैं। अब With a canopy stretching over 4,069 square meters, making it the 10th largest banyan tree in the world, it is supported by 2 main trunks and 4 secondary roots. At its base, its circumference measures over 10 meters. It stands over 27 meters tall on a raised platform constructed at its base, on which miniature shrines to Hindu gods have been built. Sacred bells hang from its branches. The grove is usually secluded but rarely quiet. Hundreds of monkeys reside in its leafy branches and feast on the offerings of those who come to pray at the spot. But even their chatter is drowned by the chirping of crickets, which are active even during the day. Over the last few years, Ashokanand has seen a growing interest in the tree. A few scientists and reporters have visited it, but the tree has never been quite a tourist attraction. Like the 500-year-old Kantharpur banyan tree in Gujarat's Gandhinagar or the 300-year-old banyan tree in Ajara district of Maharashtra's Kolhapur. तो ये जो हमारे पीछे जो ये पेड़ है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? नर्सरी। हाँ, नहीं ये जो पेड़ है सिद्धवरी। हाँ, सिद्धवरी में आप लोग यहाँ पे आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? हाँ, करते हैं। कब आते हैं? जय पूर्णमासी, मावस और होली दिवाली। तो कब से आप बचपन से देख रहे हैं? हाँ, जब से यहाँ आए तभी से देख रहे हैं। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? हम आए यहाँ से अलीगढ़ से, पलंग अलीगढ़ माते खैर से। अच्छा, कितने साल पहले? हो गई 20-30 साल। तो अच्छा, तो यहाँ जो मतलब यहाँ किस तरह की आस्थाएं हैं लोगों की? लोग सब गांव में सब जाते हैं वहाँ पे? हाँ, गंगा नहाने आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है? आप यहाँ जो पंडित जी है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जो भी आता है समस्याओं को लेके उनकी समस्या दूर हो जाती है। आपको कैसा हो जाती है? आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है। हाँ। और आपको क्या लगता है कितने साल पुरानी होगी ये सिद्धवरी? हाँ, हमने तो ऐसी देखी है सिद्धवरी। अच्छा, हाँ। तो मतलब कितना हजारों साल? देखो जब आता है तो ना कह सकेंगे हजारों साल की है कब की है। हाँ। तो यहाँ सर्वे वाले आते हैं? हाँ। Aarti Garg, a scientist at the PSI in Allahabad, identified the Siddhvari sacred grove during field surveys for the Ministry of Environment project on floristic diversity of Upper Ganga Ramsar site in Uttar Pradesh. PSI scientists conducted field surveys between 2012 and 2017 from Bridge Ghat in UP's Ghaziabad district to Narora in its Bulandshahar district. The Siddhvari sacred grove stands on the edge of a ridge that marks the beginning of the forest land designated as a Ramsar site in 2005. Garg collaborated with a research team from Romania who have developed an innovative method to estimate the age of the living trees without causing lasting damage to the tree trunk. For the team, the sample collection for which they visited India in 2018 was a unique experience in itself. Thanks to the tree's sacred status, sample collection requires not only the permission of the National Biodiversity Authority of India, but also the consent of the local guardians, who is, in this case, the priests. The team had to perform a ritual and circle the tree 7 times while praying for it to allow and forgive the investigation process. To carry out the study, researchers extracted a sample of about 34 cm long from one of the main stems of the tree. A small coring hole was then shut with a special polymer sealing product to prevent infection. 3 tiny segments of wood, each about a millimeter long, were selected along the sample to undergo pre-treatment and radiocarbon dating. The analysis revealed that the tree's age was about 450 years, give or take 50 years. This makes it the oldest banyan tree in the world to be radiocarbon dated. However, it is not the oldest banyan tree in the world. Pillalammari,
A banyan tree in Telangana's Mehboob district is considered the oldest, dating back to 800 years as per historical records. The sacred status of the tree offers it a measure of protection from encroachers, but that's not the only threat it faces. According to the scientists, the banyan should be monitored in the context of climate change for emerging pathogens, stress, etc. The team is particularly concerned that the canopy is not growing unilaterally, which can affect the tree's structural integrity in the coming years. The team wrote in the study that the tree has an unusual architecture in that it consists of two main units containing the primary stems covered by roots and just four secondary prop roots. As a result, the canopy is disproportionately expanding in one direction, that is, towards the Ganga. This unbalanced growth calls for implementing preventive protection measures to monitor and conserve this archaic botanical treasure, the team wrote in its study. For now, the tree's fate remains in the hand of the local priests, whose faith drives the motivation to conserve it, once again demonstrating that engaging local communities can help effectively preserve unknown and undiscovered ecological treasures. So, like we heard, that though the scientific data shows that this tree is about 450 years old, the locals here believe that its age goes far back and that it was that it was seeded sometime during the Mahabharat. So that puts the age somewhere in thousands of years old. Of course, there are disputes about which is the oldest tree in India, and we do know that there is another one in Telangana which is believed to be 850 years old and is currently thought to be the oldest in the world. But so far, this particular tree is, at least on paper, with scientific evidence, it's the oldest one to be dated. This is Mohana Basu, assistant editor at ThePrint, reporting this story along with Deba and Datta behind the camera.